I don't see him becoming a prime minister anytime in the near future. I don't see any politician from Congress becoming a prime minister in the near future. Not because I do not want that, but because I see they do not have the proper leadership. Go to Chandni Chowk, any restaurant, have your lunch, and just notice the waiters. All of them. Just notice what language are they talking or each other. I am asking everyone to do it. I can tell you when I am Bengali, I can tell you who was the Bangladeshi who is not. I can tell you because our Bengali is slightly different from their Bengali. Yes. I can tell you he's a Rohingya because his Bengali mixed is different from Bangladeshi's Bengali. We know it. It's in the front of our eyes. Who doesn't know that these are illegal? A lot of people ask me to write about Khalistan. A lot of people said, no, write about Khalistan. Why don't you never write about Khalistan? What is it? I said, because I know that my Sikh brothers are ready to fight the Khalistanis. वही लड़ लेगा उससे मुझे बोलना ही ना होता कभी अगर कोई चिल्लाया खालिस्तान तो भाई मैं बस काफ़ी हमारे वी आर सिख ब्रदर्स हु विल अपोज दैट एंड फाइट दैट तो मेरे को बोलने की जरूरत ही क्या उसके बीच में सेम वे इफ आई सी समथिंग रॉन्ग इन माई प्रैक्टिसेस कुछ भी मुझे गलत दिखेगा तो मैं उसके लिए लड़ूंगा देवर गर्ल 19-year-old girl from Uttarakhand. She was working in Delhi. 2012, the same year when Nirbhaya happened. Yes. 2012, she was on her way back home from near the JNU. She was abducted in a car, red Indica. She was abducted and then she was brutalized in Chawla in Haryana. And when I say brutalized, you can read the case. Yes. You just read the case and it's no over. The lower court, death penalty to 3 suspects, culprits. High Court, same. Supreme Court, last year, 3. Either the girl didn't die, rape didn't happen, he was not brutalized. And if you read the case in detail, and there was कंटेंट हो जाता है ना कोर्ट का अगर हम कुछ बोल देंगे अभी तो कंटेंट हो गया कोर्ट का नोटिस आ जाता है फिर से सी एक लड़की को एबडक्ट किए गाड़ी मिल गई सीमन सैंपल मैच हो गया सब कुछ मैच हो गया वो फ्री कैसे हुआ क्योंकि आपने बोला कि ये परमिसेबल नहीं है कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये एविडेंस बस इसके ऊपर ही हुआ इसके ऊपर नहीं किया फादर ओल्ड मैन इज फाइटिंग अ केस सुप्रीम कोर्ट में वापस चैलेंज किया ये निर्भया से पहले हुआ था एंड देन निर्भया हैपेंड व्हेन एंटायर दिल्ली स्टूड अप तो मतलब ये कैसे कि 2012 में केस होता है और हम बैठे 2024 में 12 साल के अंदर अंदर लोअर कोर्ट ने भी आपको डेथ सेंटेंस दिया हाई कोर्ट ने भी आपको डेथ सेंटेंस दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पे कर दिया बेसिस ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस तो लैक ऑफ एविडेंस नीचे नहीं था या हाई कोर्ट तक भी लैक ऑफ एविडेंस नहीं था सुप्रीम कोर्ट में आके लैक ऑफ एविडेंस कैसे हो गया विद जस्टिस का है My question comes with this situation. What do you think? I mean, when we talk about people not getting employment, people not getting jobs, isn't this the very basic fact that people are not even evolving from their own mentality and then expecting to be placed in McKinsey and companies like Next Level PSUs? So that is not the case. In fact, I was discussing the same subject on topic with one of my friend, and I said, "Boss, see, unemployment is not the issue. We have ample amount of opportunities. Yes. How? You have Ola, you have Uber, you have Swiggy, you have Zomato, you have N number of organizations working. and starting from a taxi driver to your bike rider, you can offer any job. And companies like, and I talk a lot with drivers and say Blue Cab, Yes. they pay hefty 40,000 rupees per month to the drivers. Now, it is up to you. I was traveling with one of the drivers few days back, Blue Cab, and this guy is from Rohtak, rich fellow. And so I asked him, why now driving? You must be having a lot of land there.
He said, because I want my kid to not learn what I learned when I was a kid. I want him to go to school, a proper school. He cannot go to the proper school if he's in Rohtang or in my hometown. There he'll have his own environment. He'll be growing up with the same kind of kids. And even if I send him to a missionary school or top-notch school, he will come back home and learn the same thing. So I want him to, see what I'm doing, leave what I lived, and become something else. Commendable. This is what it's and it has to change very slowly, of course, because we are 140, 145 crore. This is a huge population. Yes. So unemployment is not the issue. Issue is the intention. People have enough time. I remember a guy, I forgot his name, Anupam, I think it was Anupam Mittal. He was saying that there's one generation who talks about AI and ML, this, that, and this another generation which is busy in swiping the phone. Reels, yeah. He said, I am worried about this generation. So we have this generation as well here, who is not really bothered about his future or career. He thinks he live in today and we'll see what will happen tomorrow. This is the most dangerous society or the target segment or the who we have currently. They are aimless. With zero skill sets. Zero skill set. See, skill, you don't need skills to drive a car. Yes. Or ride a Ola, Uber, or Swiggy, Zomato. You need willingness. That why should I scroll the reel? I should be earning 20,000 a month. No, I really feel so good about these Swiggy and these delivery boys that they're hardworking. I never treat them ill. Never in my life that I have always wherever they come to my door, I ask them in water, in case they want something. I don't record it like other. I've seen a lot of people they record it and that is also content. That is also content. I never record it, but I can tell you, anyone who's been to my car or sat in my car knows how much water I keep in my in the boot, so that whenever I find a cop or a hardworking guy, I give the bottle to him. Why? Because these are hardworking. They are the future. Their kids will. I can guarantee those delivery boys, if they have kids, I am sure they're getting education, and I'm sure they'll crack it. They'll surely crack it. For sure, damn sure. Because this man will never tolerate his kid scrolling. Because he knows how much he has to work hard every day to earn that 500 rupees a day and to give him that education. Even if that parent is beating his son for scrolling or not doing anything productive, I think that's the right thing. Although parenting in India has changed a lot, and yes, it has to change, but this generation is very dangerous. This scrolling generation, I call it. We multiple times talk about, when it comes to election and the post-election phases. We are almost on the post-election phases right now. Budget is coming. People are handling their new portfolios and everything in that. My simple question, Rahul Gandhi is leader of opposition. People have a million doubts and a million assumptions, I would say n number of words. What do you think? Because people say he might not be the best of politician, he might not be the best, but he is in best in this and best in that. But I still believe that, even in politics, there has to be a certain decorum of respect between the parties, non-ruling and ruling as well. Yep. See, of course, he has 99 seats now. This is the first time that he's got 99 seats. I would say combined. नहीं 99 तो कांग्रेस की अपनी है. अच्छा, ये ठीक है, right. तो 44 था, फिर 60s में आया, right, ठीक है. उसका कॉन्फिडेंस तो है अच्छी लेवल. Yes. And now there is a change in his approach as well. We are seeing on this time that there is a change in approach. He is aggressive, for sure. He's aggressive. He's talking also. But he does a lot of loose talk. That is for sure. Yeah. So, and in parliament, and that's why he gets away with it. Because whatever you say inside parliament remains there, right? Be it criticism, abuses, whatever. You remember last year someone abused in the parliament. Nothing happened. You can't file a case against him, just inside the parliament. So similarly, he also does a lot of loose talk, like Abhay Mudra.
in front of the entire 140 crore people, he said, Yeah, शिव showing जी the का अभय मुद्रा, शिव जी का अभय मुद्रा एंड गौतम बुद्ध का अभय मुद्रा एंड गुरु नानक देव जी का अभय मुद्रा इज सेम एज कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है. Not same, but he said this is what it is. Similar Yeah, this is what it is. उनका भी अभय मुद्रा है, हमारा भी अभय मुद्रा है. How can you compare a पॉलिटी? अच्छा अभी मैं बोल दूंगा ना कि अच्छा सेम है ना, एक काम करते हैं, शिव जी का एक मूर्ति लगा देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आएगा? सेम है ना. मैं ऐसे ही अभय मुद्रा में एक शिव जी का मूर्ति लगा देते हैं हम पार्लियामेंट के अंदर, एक हम गुरु नानक देव जी का लगा देते हैं अभय मुद्रा में, और जिन जिनका अभय मुद्रा में सबका ये लगा देते हैं. नहीं कर पाएंगे, मना कर देंगे. तब वो सेक्युलरिज्म आ जाएगा बीच में. एंड आप ही की बात पकड़ी है मैंने. यू सेड अभय मुद्रा, शिव जी अभय मुद्रा एंड कांग्रेस अभय मुद्रा एंड सेक्युलरिज्म एंड ऑल दिस थिंग. लेट्स डू इट. You won't do it, and no one will do it. But he says all this thing and gets away with it, which is not right. But I don't see him becoming a prime minister anytime in the near future. I don't see any politician from Congress becoming a prime minister in the near future. Not because I do not want that, but because I see they do not have the proper leadership. वो नहीं आ रहा है. है ही नहीं, I believe. है ही नहीं. आप कब तक बोलो कि आप आज पूछ लो. मैं तो कह रहा था इनफैक्ट आफ्टर इलेक्शन मोदी जी शुड हैव सेड और rather asked कांग्रेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट. बना नहीं पाते, था ही नहीं इनके पास. Yes. And we also had the same conversation, है ना? I was saying the same thing that अगर इनको कह भी दिया जाए ना, yet these इनफैक्ट इनको ना उस दिन मोदी जी अगर आके बोलते हैं कि अरे मैं सरकार नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं 330 या 400 जो भी उनका है उतनी सीट नहीं लेके आ पाया, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी आके अपनी सरकार बना ले. पहले तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता ही बता देते. प्राइवेट इनको पता ही नहीं था प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन. मैं गारंटी देता हूँ ये इसी में लड़ते रहते हैं. और 3 महीने बाद फिर ऐसा होता है इनको 400 सीट आती बराबर. मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख के. 6 महीने तक आपका राष्ट्रपति शासन रहता, प्रेसिडेंट रूल, and after the election they would have got 300 plus seats, but they didn't do it. ठीक है, everyone wants power. Modi ji also wants power, Rahul ji also wants power, but I don't see any leadership rising from Congress side, at least not in. When I compare it with what I get to see. So for example, I get to see Yogi Adityanath doing pretty well in UP, yes. Or I see Himanta Biswa Sarma doing pretty well in Assam. Who could have thought he would invite industries into Assam? Yes. No one. Now you have industries going there, investing in Assam. At the same time, I also see other leadership rising from Rajasthan, from MP, from Maharashtra as well. But same leadership I do not see from Congress side at all. आप दिखा दो मेरे को कहीं से भी कोई leadership उठता हुआ. आंध्रा में तो मैं चलिए ठीक है मान गया कि थोड़ा सा उनका दिखता है, बट देन उनको भी उस तरीके से नहीं पलट किया जा रहा ना आगे. आप बताओ रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत अच्छा काम करते हैं. नो ही कीप्स विनिंग दैट रोहतक सीट एंड ही डज प्रीटी वेल. हैज एनी टाइम इन द पास्ट सीन कांग्रेस appreciating him ever? Very true. Motive of appreciation is very less in the party. ये आपका कुछ ये राजस्थान का सचिन पायलट साहब का किससे छुपा हुआ है? हमसे छुपा हुआ है क्या? वो तो पूरी दुनिया को दिख रहा है ना. एक अप्रिसिएशन नहीं है, आप उनको सही जगह बैठा नहीं पा रहे हो. आप लेके आओ ना लीडरशिप हमारे सामने, मैं दूंगा वोट यार आपको. आप मुद्दा लेके आओ हमारे सामने. गिव अस द what basis we should be voting for you. Now OBC caste census is not a mudda. In my opinion, it's not a mudda. Yes. Mudda should be a kid sleeping empty stomach. That's a mudda. आप बोलो कि यार this money which I am collecting as a tax, it would be invested properly in education, in healthcare. दूंगा ना आपको वोट. People are wasting time in the parliament, putting guarantees over that we will bring this mudda, we will bring the caste census and this and that. I mean, इससे एक बहुत important term मुझे याद आता है, that infiltration of Bangladeshis or Rohingyas both. I mean, what would you say? What is your opinion in that? In the fact, very dangerous, very dangerous. Because in UP only it was said in the news that around 20,000 illegal birth certificates have been, discovered. ऐसा सुनने में मतलब शायद कल या परसों की न्यूज़ में ही था. I was reading. What is your opinion in that? I am telling you, this is a ticking bomb. It's a time bomb. It will blast any time.
And I'm really worried, and I'm not saying it because, and I'm not trying to melodramatize it at all, but I have been to Bangladesh. Right? I've lived there for a while. Last year, Ramzan, I was there. Then I went there a few more times. I've seen their mentality also. I've seen this side of mentality as well. Now, do you go to Chandni Chowk by any chance? Yes, very recently. Okay. Go to Chandni Chowk, any restaurant, have your lunch, and just notice the waiters. All of them. Just notice what language are they talking or each other. I'm asking everyone to do it. I can tell you because I am Bengali, I can tell you who is a Bangladeshi who is not. I can tell you because our Bengali is slightly different from their Bengali. Yes. I can tell you he's a Rohingya because his Bengali means is different from Bangladeshi's Bengali. We know it. It's in the front of our eyes. Who doesn't know that these are illegal? And strange part is that they have obtained Aadhaar card and voter ID card. Yes. Probably a proof of citizenship. Yes. Although Aadhaar card now says that it's not a proof of citizenship. But I mean, yes, you can get a lot of benefits over that. Yeah. But because see, these people don't love the country. How can they will destroy India because they do not belong to this land? As simple as that. Do you love your country? Obviously. I love my country. The country doesn't belong to them. Simple, plain, straight. But I'm not sure that why isn't there any strict, policy coming to that. I mean, I'm sure CA and RC would be a major breakthrough for that. I'm sure. They'll find ways to break that as well. I'm telling you. Uttarakhand, a hill state. First state to actually, enforce that. They're like कि हम इसको लागू कर देंगे. Yes. क्यों लागू कर देंगे? क्योंकि हुआ है ना वहाँ पे. हमको दिखता होता हुआ. I have a house near Haldwani. It's called Katgudam. Yes. And do one thing. We all go to Nainital. आप हल्का सा भीमताल से डिटूर कर लो. आपको अपनी आंखों में दिख जाएगा क्या चल रहा है वहाँ पे. True. Anyone living in Kumaon can't speak Kumaoni. I am from Garhwal. I can't speak Garhwali, but I can understand Garhwali pretty well. आप बुलवा के देख लो रोहिंग्या बांग्लादेशी से गढ़वानी कोई जो रहता है वहाँ पे कुमाऊनी बुलवा के दिखा. They can't speak it. They can't even understand it. And it pains me. It makes, you can sense that Yes. Anger and aggression coming out. Because eventually it's a burden increasing on the country. Even if it's 5 crore, those 5 crore don't belong to this land. They will destroy your railway system, then try to, destroy Vande Bharat or whatever. I'm just giving an example, but because they have no emotional connect with this country. That is actually the gate from where are they entering. But it brings a very important point to my mind when we talk about this section, when we recently saw some students of the elite colleges like IITs getting influenced by terrorist organization. Very recently, we saw one guy who was arrested with the name I'm not sure, but his room was all filled with, anti-India slogans. He was in conversation with the people from terrorist organizations. I believe that it's a matter of concern for the government as well, that, how easily are the youngsters being influenced with these organizations or on any basis, money or whatsoever benefits. I mean, a student is studying in IIT. His life is anyway sorted once the chap passes out from the college. What exactly is his liability that he is joining that? I mean, it will become too controversial, but in my personal opinion capacity, what I can tell you is, of course, it is their choice. And they have to fight it themselves. Government cannot do anything. I can guarantee. A lot of people ask me to write about Khalistan. A lot of people said, write about Khalistan. Why don't you never write about Khalistan? What is there? I said, because I know that my Sikh brothers are ready to fight the Khalistanis. वही लड़ लेगा उससे. मुझे बोलना ही ना होता कुछ भी. अगर कोई चिल्लाया खालिस्तान तो भाई मेरे पास काफी हमारे वी हैव सिख ब्रदर्स हु विल अपोज देम एंड फाइट देम. तो मेरे को बोलने की जरूरत ही क्या उसमें बीच में. सेम वे इफ आई सी समथिंग रॉन्ग इन माय प्रैक्टिसेस, कुछ भी मुझे गलत दिखेगा तो मैं उसके लिए लड़ूंगा. इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इट. सिमिलरली कोई समवन
some terrorist is getting trained at a IIT or some other elite institution, तो उनका काम है आपस में उसको लड़ना. हम क्या कर लेंगे उसको लड़के? हम लड़ेंगे, वो बोलेंगे oh, ये तो he is targeting us. We say something about them, they'll say he is targeting us. Although for me, it is my country. That's it. Ultimately. I exist because my country exists. कंट्री नहीं रहेगा तो मैं क्या, मेरा फेल क्या, मैं क्या, मेरा पैसा कहाँ जाएगा? इट इज बिकॉज ऑफ द कंट्री दैट वी ऑल एग्जिस्ट. एनीवन हु इज गोइंग अगेंस्ट द कंट्री, आई मीन टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. गवर्नमेंट क्या करता है ना, you had all kind of evidences against अजमल कसाब. इसने मतलब लाइव रिकॉर्डिंग है ना उसकी, वो 9 साल केस चला है उसका. People were fighting for his mercy petition. I believe there were some people who were trying कि human rights भी involved हो जाए. कितने उसका क्या ह्यूमन राइट, और क्या प्रूव करना था आपको 9 साल के अंदर कि इसने वो अटैक किया था? ये प्रूव करना था आपको, और उसको प्रूव करने में आपको इतना ही लग गया 8 साल. अगर अगले दिन उसको पकड़ के अगले दिन ठीक करके बराबर, मैं कह रहा हूँ पूरा इलाज करके मेकिंग ह्यूमन प्रॉपर वन पीस में, और ढंग से लाइव रिकॉर्डिंग करके आप उसका करते ना हैंगिंग. एक एग्जांपल सेट होता. Yes. आप व्हाट वी डिड, ह्यूमन राइट्स, दिस दैट, some time back there was The International Court of Justice too was involved, I believe, in some of the matter. उस पे तक भी एक बार गया था. Sir, tell me one thing. Israel and Hamas had war, right? Entire Human Rights Commission, this, that, everyone is shouting. Israel is just saying one thing: it is my war. I'll finish it. Do whatever you feel like. Netanyahu is an international criminal as per few countries and as per South Africa as well. Yes. उसने भी केस किया हुआ है. उसे क्या फर्क पड़ रहा है? I love Israel because Israel love its people. Jewish people जो बोलते हैं लोग, they love each other. And they'll do anything to protect the soil. They know हम लोग 85-90 लाख हैं भाई, नहीं करेंगे तो हम ही मार देंगे. Yes, and that too surrounded by the entire number of. So they have to do it. A lot of people also tell me, how can you justify this? I mean, I'm justifying anything. जो 7th को हुआ था अक्टूबर, वो भी गलत था. जो ये कर रहा है ये भी गलत है. लेकिन स्टार्ट तो मुझे दिखा ना किसने किया है. अब आपने किसी को लड़ाई अगर started a war, then fight it. Recently, I believe yesterday or day before yesterday, the chief of Hamas. The next is also the chief of Abbas army is also assassinated yesterday. वो कर दिया. But just give an example कि हम जो इतना leverage देते हैं ना, Yasin Malik on record said what he did. Yes. He was having tea with the Prime Minister of India inside Parliament, inside his house. A famous journalist was holding his hand, roaming around, smiling. इसको नहीं पता उसके हरकतें काटना में, बिट्टा कराटे की इसको नहीं पता हरकतें काटना में. क्यों नहीं भाई, उनको आपने उस टाइम जब जरूरत थी उसको आपने you hanged him or gave him punishment, the required punishment. Even today, where's the punishment? He's in Tihar jail. Okay, great, but where's the punishment? I believe there is a major concern with the processes of judiciary. See, I will not go towards very extreme cases. I have had some very rich experiences in terms of entire domestic violence community, and I'm very gender neutral. I would not say that it only happened with women, it happened with men as well. Yeah. And to the most crucial factor, I have seen cases getting lingered on like anything. And if anybody who's well brushed up, it's actually appreciating that Justice Chandrachud is actually taking it into consideration these days. But leaves and holidays in courts is like a person cannot sneeze properly, done, it's a half day leave. Any certain concern or issue that starts happening, it's a leave. Matlab, there is आपने देखिए लिस्ट देखिए, holiday list. Yes. Absurd. Matlab, it's a life of enjoyment. And people, I'll tell you very honestly, I have been familiar with the lowermost court to the Supreme Court as well. And there is a chunk of lawyers which I appreciate and respect with my utmost heart, because these guys are like, a pack of knowledge. You sit with them and they can turn out anything that has happened bad with you. And there is a chunk of lawyer sitting in the most elite chamber,
coming out with a team of 10 people and has zero knowledge and does nothing but unnecessary liaising with people. Iska usse. And then there are people I have faced issues with in domestic violences wherein the family of a girl or a boy are getting calls from politicians, local level politicians, that sort it out, or this will be the outcome and this and that. Just the reason being, judiciary was not able to perform its role properly. So isn't that particularly a reason of major of the issues that still happen, that there is a lack of fear in that case? I believe even Grandmaster Shifuji Bhardwaj, Chaur Bhardwaj also mentioned the same in one of his videos, that the only reason, it's not about which party you belong to, it's not about whom do you follow, it's about what correct punishment is. Yep, absolutely, totally, and at the right time. See, we always say this: justice delayed, delayed is justice denied. And when you have evidences, I'll give you another example. There was a girl, 19-year-old girl from Uttarakhand. She was working in Delhi. 2012, the same year when Nirbhaya happened. Yes. 2012, she was on her way back home from near the JNU. She was abducted in a car, red Indica. She was abducted, and then she was brutalized in Chawla and in Haryana. And when I say brutalized, you can read the case. Yes. You just read the case in Google. The lower court, death penalty to 3 suspects, culprits. High Court, same. Supreme Court, last year, free. Either the girl didn't die, the rape didn't happen, she was not brutalized. And if you read the case in detail, and there was कंटेंट हो जाता है ना कोर्ट का, अगर हम कुछ बोल देंगे अभी तो कंटेंट हो गया कोर्ट का, नोटिस आ जाता है फिर से. सी, एक लड़की को एबडक्ट किया, गाड़ी मिल गई, सीमेन सैंपल मैच हो गया, सब कुछ मैच हो गया, वो फ्री कैसे हुआ? क्योंकि आपने बोला कि ये परमिसेबल नहीं है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये एविडेंस, बस इसलिए वो बरी हो गए, इसलिए वो नहीं किया. फादर ओल्ड मैन इज फाइटिंग अ केस, सुप्रीम कोर्ट में वापस चैलेंज किया. ये निर्भया से पहले हुआ था. एंड देन निर्भया हैपेंड व्हेन एंटायर दिल्ली स्टूड अप. तो मतलब ये कैसे कि 2012 में केस होता है और हम बैठे 2024 में, 12 साल के अंदर अंदर लोअर कोर्ट ने भी आपको डेथ सेंटेंस दिया, हाई कोर्ट ने भी आपको डेथ सेंटेंस दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया बेसिस ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस. तो लैक ऑफ एविडेंस नीचे नहीं था, या हाई कोर्ट तक भी लैक ऑफ एविडेंस नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में आके लैक ऑफ एविडेंस कैसे हो गया? Where's the justice? Justice कहाँ है? My soul, just shivers out for the lawyers who actually fight for these. Yeah, criminals. Pardon my word, but more on that actually, I would say, because कौन होता होगा जो इनके लिए केस लड़ने के लिए खड़ा होता होगा, knowing the bloody fact that they have done it, because lawyers understand. Yeah. केस की स्टोरी बता देती है कौन कितना सच बोल रहा है. Cops, when I meet cops tell us that हमको day one पे पता होता है कौन है. They are very familiar with the MO. उनकी ट्रेनिंग modus operandi की ऐसी होती है that they're well aware कि किसने क्या गलत किया है, क्या नहीं किया है. And ये हम लोग जब इस केस की अभी जब आप you were telling about this case, let alone what court does, the other processes wherein an FIR is done, उसमें ही एक इंसान victim इतना harass हो जाता है कि वो कोर्ट जाने की सोचता नहीं है. I tell you, जिस organization से we were helping out people in the cases of domestic violence, and I would rather urge people जिनको भी इस तरीके के issue रहते हैं, you can just contact us, we might be able to help you out in the best way possible. But people don't even put out their case in front just because they know that there is no help that they are going to get, or else जो society हमारी जो 4 लोग वाली है वो क्या सोचेगी? Multiple of the marital rape cases don't even come to air or to the ears of legal department because people have their own assumptions. बिल्कुल. So Indian judiciary needs a complete revamp. I am not saying कि उनका हायरिंग प्रोसेस चेंज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं. भाई मुझे कोई लीगल नोटिस मत भेजना, मेरे को कोई लेना देना नहीं आपके हायरिंग प्रोसेस में, जैसे चल रहा चलने दो. और आई एम सेइंग इज कि उसमें ऐसा होना चाहिए, हैज टू बी फास्टर. मतलब एक जजमेंट जो है, the process to cases processing is to be faster. 3.5 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है. मतलब
सॉरी टोटली केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, यार खत्म करो ना यार, बैकलॉग को निकालो. मतलब अभी एज अ प्राइवेट एम्प्लॉइज जब सैटरडे संडे की छुट्टी का मंडे पहुंचते तो पहले मैं ही बोला था ना, बैकलॉग क्लियर कर दो अपने ईमेल्स के, इतना पड़ा हुआ है उसको क्लियर करो. आई कांट यू क्लियर द बैकलॉग्स. And I can tell you there are a lot of criminals who became criminal because they didn't get justice on time. Yes. That Because and the my psychology is destroyed. Ultimately, the psychology is destroyed. They're like, भाई हमारे साथ मदद नहीं हुई तो but obviously we'll have to take out the alternative route. there are a lot of people जिनकी किताबें पढ़ी है, जिसके बारे में पढ़ा है, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने जो कि क्रिमिनल बने हैं क्योंकि उनको जस्टिस नहीं मिला टाइम पे. Now I am not at all justifying what they are doing, what they have been doing in their life. You cannot justify. I'm not justifying that at all. ठीक है, क्राइम इज अ क्राइम, बट शायद वो सारे क्राइम ना होते अगर वो जस्टिस टाइम पे मिल जाता. सो ऑफ कोर्स इट हैज टू बी फास्टेस्ट. आप थोड़ा सा ठीक, अगर कोई सुने हमारी बात तो यार कुछ करो यार. You know, I'll just sum up to one last topic and then Rajat will take over. And that topic is about, we have heard a lot of noise about Agniveers. And fair portion of the people from the army says it's good, fair people says it's bad, or, you know, not competent yet enough. Then the government has also improvised. New amendments have been done. I believe the defense minister emphasized a lot, even in the parliament, and he was rather ready to, you know, entirely describe the new scenario in the parliament when the opposition was making a fuss about it. What do you think? I mean, my point of view, I don't see a problem in that. As simple as that. There's no explanation, justification to it. I don't see a problem, because if I just talk to a normal employee, he's not even having 10,000 rupees for the next year to cope up with. Chaps are getting 21 lakhs or some amount that was promised by the defense forces. I mean, that amount in itself is credible enough to justify that 4 साल में आप कमा. अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, दुनिया में 2 कंट्री ऐसी हैं, उसमें से एक कंट्री इजराइल, जहाँ पे की मैंडेटरी है सर्विस. Yes, just after, right after the 4th standard. करेक्ट. तो एंड 2 years of मैंडेटरी सर्विस. Yes. तो अगर अग्निवीर खराब है या गलत है तो वो स्कीम भी गलत होनी चाहिए, क्योंकि वहां भी उसके 2 साल तो खराब हो ही रहे ना एक तरीके से. Yes. एंड व्हाइल ही इज यंग, है ना, स्कूल के बाद ही निकाल दिया. 9 years, what we call it. या सो आई थिंक वहां पे ऐसा होता है कि एक ग्रेजुएशन के बाद इफ यू वांट टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर ऐसा कुछ होता है, if you want to go to that level you have to first serve and then only you can do the mandatory criteria. Mandatory. Yes, I think it's after 12th or after graduation, I don't know, but वहाँ भी 2 साल तो वेस्ट हो ही रहे ना उस इंसान के जो कि 2 साल सर्व करके जा रहा है. तो स्टिल यार आर्मी भी उनकी टॉप नॉच है, टेक्नोलॉजी टॉप नॉच है. मतलब जितना तो हमारे गुड़गांव की पॉपुलेशन उतना पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है. Yes. तुम्बा बना रखा उसने पूरी दुनिया में घूम घूम के, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है उसका. हजारों मिसाइल फायर हो जाती है तो एक नहीं गिरती उनकी जमीन पे. 5,000 जाए तो जाके कुछ गिरे थे जब ये हुआ था 7 अक्टूबर. तो स्कीम तो अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, बट मैं इसका एक दूसरा साइड है, वो है इम्प्लीमेंटेशन. बहुत ही इडियोटिक ढंग से गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था. आई गिव यू एन एग्जांपल. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द भर्ती. ठीक है, रंग रोड भर्ती आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका फिजिकल हो गया बढ़िया, एकदम चकाचक निकल गया. ठीक है, आप रिटर्न में पहुंचे हो, या उल्टा करता हूँ, रिटर्न में आपका क्लियर हो गया, आप फिजिकल में पहुंचे हो और आपको खबर लगी कि ये सब कैंसिल हो गया है. नाउ यू हैव टू गो कम थ्रू द अग्निवीर स्कीम. तो आज ही उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं. जो रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता था वो आप करते रहते, साथ में आप अग्निवीर को भी लेते रहते हैं. आपको उसमें क्या होता कि आपका बाद में अमलकमेशन हो सकता है, 3-4 साल बाद हो जाता, वो इजी नहीं रहता. आप फिर इसको इतना स्क्रैप ही कर देते हैं, सिर्फ बोलते हैं दिस इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस नाउ. ठीक है, बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कुछ क्वालिफाई भी हो गए थे, उनका स्नैप हो गया था, क्वालिफाइड करने हो गया था. Yes. बोल रहे कि आपका किसी का तो फिजिकल निकल गया था, उनका भी स्नैप हो गया. तो वो कैसा लगेगा उनको? बट ऑब्वियसली वो एग्रेशन लाइक ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी फॉर 4-5 years. ही वेस्टेड हिज 4-5 years फॉर अग्निवीर, और उसमें पता नहीं इसको होगा कि नहीं होगा, बट अगर हो भी जाए, बट अगेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलर आर्मी. अभी आई थिंक गवर्नमेंट इज अगेन वोकन अप, दे विल बी इम्प्लीमेंटेड इट अगेन प्रॉपर्ली. शायद वो 25% 50% भी कर रहे हैं इसको. एंड देन स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो स्टार्टेड गिविंग रिजर्वेशन टू अग्निवीर्स. वो भी आने लगा है कि इन उत्तराखंड पुलिस will absorb 10% अग्निवीर अंडर. multiple government bodies are Yeah, they're doing it.
और आई थिंक 4 years में सैलरी प्लस जो लमसम अमाउंट मिलता है, इट्स अ गुड अमाउंट फॉर एनीवन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस एज वेल। Yes. तो ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकता है वो, 17 साल की वरना वो नहीं जब ज्वाइन करता है तो 21 की एज में वहाँ से बाहर आता है एंड 24 तक वो ग्रेजुएट हो जाता है। Yes. आई डोंट थिंक इट्स अ बैड एज। आई डिड माय ग्रेजुएशन इन व्हाट 22 ऐसा कुछ 23 तक ही हम लोग मैंने वेस्ट किया था काफी टाइम, कहीं मर्चेंट नहीं में, कभी यहाँ कहीं वहाँ, बट मेरे भी ग्रेजुएशन थोड़ा लेट ही हुआ था, स्टिल यहाँ तक पहुँच गया हूँ। जैसे ही पहुँचा अलग बात है, बट पहुँच गया हूँ। सो ऑफ कोर्स स्कीम वाज गुड, इंटेंशन वाज गुड, इंटेंशन वाज टू रिड्यूस द बर्डन जो हमारे पास इस टाइम पे जो 6-6.5 लाख onboarding defense की हो सके अच्छे से, we could get more of the people to defense, and then multiple factors अच्छे। Yeah, so investing in technology more than Yes. humans. So that was the idea. आइडिया अच्छा था, इम्प्लीमेंट ने बहुत ही बकवास किया। मुझे लगता है कि इसको और बेटर स्टडी करके अगर इम्प्लीमेंट करते तो और बेटर होता। वो बच्चे जो 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे थे और जिनके हाथ में 2-2 साल का अटेम्प्ट बचा हुआ था, वो 5 साल का गैप रखना चाहिए था आपको। तो आज इम्प्लीमेंट किया तो 5 साल का रखते, यहाँ से रेगुलर को लेते। And who is asking you to record 100% from regulars? No one takes data from you यार। Yes. आप वहां से 50% लो, आप वहां से 50% लो, Completely independent body। आप खेल करेंगे आपका चुपचाप से। What गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे कमिट दिस मिस्टेक क्वाइट रेगुलरली। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ये ऐसा कर रहा है, अरे बोलना ही क्यों? पूछ कौन रहा है आपसे कि आप यहाँ से कितने ले रहे हो, वहां से कितने ले रहे हो? और ले रहे हो तो आप बोलते हैं 50% यहाँ से लेते हैं, 50% यहाँ से लेते हैं। आइडिया इज टू हैव 100% फ्रॉम आगे। तो वो चीज को आई थिंक थोड़ा सा बुरा इम्प्लीमेंट किया, जिसका खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ा यूपी इलेक्शंस में। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा जो आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहा था या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसको मतलब नहीं है एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Yes, उसको अपनी रोजमर्रा की लाइफ जीनी है, उसको पता है कैसे सर्वाइव करना। बिल्कुल, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने टावर बन रहे हैं, कितने बिल्डिंग बन रहे हैं। उसने नीट का एग्जाम दिया है। यूपी में 7 से 8 पेपर लीक हुए थे पिछले 3-4 साल के अंदर। Yes. तो वो बच्चे जिसने प्रिपेयर किया उसका तो टाइम खराब हुआ ना। आपने बोल दिया अच्छा रीटेस्ट होगा, या आपने टेस्ट ही कैंसिल कर दिया। कौन सा टेस्ट नहीं हुआ लीक? आप यूपी में तो कंटिन्यूअसली बैक टू बैक लीक हो रहे थे। तो उस जो बच्चा और उसके पेरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहा था नीट के लिए, नीट क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ था, मेरे को बाबा आ रहा है नीट। Yes. बट यू कैन इग्नोर नीट एंड yes, there are some multiple exams। मल्टीपल एग्जाम्स। तो वो जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा था एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसके आपने 6 महीने 8 महीने खराब कर दिए। एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम। 6-8 महीने किसी की लाइफ में बहुत खुशी होते हैं। बहुत। मैं आपसे बोलूंगा आपके लिए भी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी होंगी। 6 से 8 महीने हम सबके लिए बहुत होते हैं। आपने वो वेस्ट कर दिए एक तरीके से। जो बच्चा 5 साल से अग्निवीर के लिए प्रिपेयर करता है, आपने उसका टाइम पूरा खराब कर दिया। वो तो अपना पूरा फिजिकल सुबह सुबह उठ के दौड़ता है। हरियाणा के हाईवे में जाते हैं सुबह, आपको दिखता है 5 बजे बच्चे सब भाग रहे होते हैं, यंग किड्स रनिंग अराउंड, फिजिकल एंड्योरेंस की वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो खराब हो गया एक तरीके से। ये नाउ लिटरली मेड ओनली वन एंट्री पॉइंट फॉर आर्मी, व्हिच इज अग्निवीर। वो नहीं होना चाहिए था। अगेन स्कीम वाज गुड, इम्प्लीमेंटेशन वाज रियली बैड। So that is, I think this is what I want to say on this subject. You know, it has been some very interesting topics. We have covered some very nice point of views, because ultimately what matters is formation of opinions after something creates a feedback. Feedback brings improvisation. And I believe it has been really a pleasure to have a word with you, Siddharth. And you know, the entire team of Trio Talks is really thankful that you could give us the time. Okay. Thank you so much for inviting.